Hello, welcome back to the CNA daily newspaper analysis. Today we are overloaded with the contents that you can see in your list. Okay, so we have got some of the 6 topics to discuss today. So let's start. The first one being news about giving flats to Rohingyas. See, recently, Union Minister of Urban Affairs Hardeep Singh Puri, okay, he went on for a tweet that India has directly welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingyas have presumably shifted to the EWS flats, that is the economically weaker section, okay, in a Bakarwala area of Delhi. Okay, so this move or this tweet has been greatly criticized by some of the wings, okay, be it the Vishnu Hindu Parishad, okay, be it any other organizations, okay. Even this has been vehemently opposed by the Ministry of Home Affairs. So the Home Ministry directly overrules a statement made by the Minister of Urban Development welcoming the landmark decision of directly giving on some around 1100 Rohingya refugees in Delhi, which needs to be shifted to the flats. But we can say that the MHA directly issued an order that the shanty town where the Rohingyas were now living is directly to be designated as a detention center. So today we can see, you can see this area, okay? You can see this area is the Rohingya area where the children are directly, that is the migrant children are directly playing. So it is respectively in an areas known as the Kalend Kunj of Delhi. Okay, so if I say about Kalend Kunj, तो मान लो अगर मैं ऐसे यहाँ पे यमुना को directly I make Yamuna to flow. Okay, so supposedly this is Yamuna. This is the extent of Yamuna. तो यमुना ऐसे यहाँ पे flow कर रहा है, ठीक है? And supposedly this is a particular boundary. ऐसे एक बाउंड्री जाता है इसका, यहाँ पे हम लोग का यूपी है और यहाँ पे हम लोग का दिल्ली है. So this Yamuna is been divided into two parts. Okay. So यहाँ पे मान लो हम लोग का एक एक्सप्रेसवे जाते हैं, तो जो हम लोग को बोलते हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे. ओके, तो ये हम लोग जानते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर साइड, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में हम लोग को यहाँ मिलता है क्या, कलेंड कुंज. ओके, कलेंड कुंज, जहाँ पे हम लोग का रेफ्यूजी सेटलमेंट्स का जो ये देख रहे हो, ये इन दिस पर्टिकुलर एरिया है. ओके, इन दिस नियर टू दिस कलेंड कुंज, यहाँ पे अभी जैसे सिंस दिस इज न्यूज respective bird sanctuary over here, which is known as the Okhla bird sanctuary. Okay, ये भी देख लेना. तो this make becomes important क्योंकि ये बहुत पास है किसका, this detention center का, और ये directly on the very other side of the river Yamuna it is directly situated. ठीक है, तो ओखला बर्ड सेंचुरीज यहाँ पे आता है. तो अगर मैं पूरा दिल्ली में देख लूं तो ये कलिंद कुंज कहाँ पे आता है, इट्स डायरेक्टली सिचुएटेड इन द ईस्टर्न दिल्ली, समवेयर अराउंड हियर. तो अगर मैं ऐसे मैप ड्रॉ कर दूं तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट. सो इन दिस वेरी रीजन ऑफ साउथ ईस्ट यू कैन सी द कलेंड कुंज. ओके, तो ये वाला लोकेशन है इन दिस रिस्पेक्टिव मैप. तो यहाँ पे अभी क्या इशू है कि लाइक ये जब हरदीप सिंह पुरी ने बोल दिया गया कि लाइक विल प्रोवाइड फ्लैट्स, तो यहाँ पे अभी अपोजिशन आ गया है, ठीक है, और अभी वहां पे पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, ठीक है. तो वो हम लोग को पॉलिटिक्स हम लोग को इतना चाहिए नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, मेन कंटेंट्स. तो अभी फिलहाल मैं अगर रोहिंग्यास के बारे में बोलूं तो आई हैव मेंशन इन माय अदर एनालिसिस आल्सो, बट फिर भी मैं अभी थोड़ा बोल देता हूं कि रोहिंग्यास कौन है. द पीपल हु हैव डायरेक्टली फेस्ड एट्रोसिटीज बाय द मिलिट्री ऑफ द म्यांमारीज, एंड दोज पीपल हु हैव डायरेक्टली केम to the countries like India, Bangladesh, okay, for their survival are known as the Rohingyas. Okay, so this ethnic cleansing and crimes against the humanity is directly being faced by these Rohingya sections. Okay, and these Rohingyas are primarily what? They are Muslims who live in a Buddhist majority Myanmar Rakhine state. Okay, and we can see they are made up of more than 3.6 million people who have been rendered stateless and who are facing discrimination in Myanmar because Myanmar does not recognize these Rohingyas to be their official amongst their official ethnic groups. Okay, आज म्यांमार में कम से कम 135 ऑफिशियल एथनिक ग्रुप्स है और इस 135 में रोहिंग्यास नहीं आते, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा अगर म्यांमार का मैप ड्रॉ कर दूं तो इट्स समथिंग लाइक दिस. ओके, म्यांमार मैप इज समथिंग, ये ऐसे करके ऐसे आता है. ओके, नीचे करके ऐसे आएगा. तो रखाइन कहां पे है, दिस इज द एरिया, ये एरिया है रखाइन स्टेट. दिस इज द रखाइन स्टेट, दिस इज म्यांमार, दिस इज रखाइन स्टेट. एंड फ्रॉम यहां से ये बांग्लादेश में जाते हैं, ये इंडिया में आते हैं क्रॉसिंग द बॉर्डर्स. ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं नाफ रिवर, NAF.
So this river system also becomes very important. Naf River. Okay? So therefore, you can see that today we have got a lot many number of Rohingyas in our country, which is directly coming in the in some of the detention camps. So therefore, according to some of the Home Ministry estimate, around 40,000 Rohingyas migrants live in different parts of the country, including Delhi. And in 2021, the government informed the Rajya Sabha that still various number of illegal Rohingya immigrants are directly staying in some more than 12 states and union territories. And these states can be JNK, Telangana, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan, Assam, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Kerala. इन सब states में बहुत ज्यादा है. आज हम लोग का असम में क्यों मिलता है ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्यास? बिकॉज वी डू नॉट हैव गॉट एनी फॉर्म ऑफ आईएलपी, दैट इज द इनर लाइन परमिट. लेकिन बाकी स्टेट्स में चला जाओ तो वहां पे आईएलपी है, वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है. Today, the Rohingyas look similar to the population that we have, that is the minority population we have in our respective state. Okay, so this illegal immigrants is maybe a respective problem for our country's internal security, because in July 2021, the Union Ministry even said that the illegal Rohingyas immigrants pose a threat to the national security as they are very much indulged in various number of illegal activities. So iodine, we can see such peoples are directly getting captured, such peoples are directly getting involved in some number of crimes, which directly makes the law and order situation of the respective state as well as the country in shackles. Okay, so ये एक particular news था associated with what? The respective Rohingyas. Okay, चलो next पे आते हैं. टॉकिंग अबाउट डेवलप कंट्रीज. तो ये डेवलप कंट्रीज का जो इश्यू था ये कब हो गया था? जब इंडिपेंडेंस डे में अपना प्यारा प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि वी विल डायरेक्टली बी अ डेवलप कंट्री इन द कमिंग नेक्स्ट 25 years. तो अराउंड 2047 के बाद बोल रहे. तो 2047 तक हम लोग डेवलप हो जाओगे, तुम लोग डेवलप हो जाओगे. ठीक है, यू विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड. अगर तुम लोग पहले बाहर चला जाओ तो इंडिया, जब बोलोगे इंडिया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेवलपिंग कंट्री. India would be said as a developed country because it's a particular resolution that has been taken by our respective leader. So agar main abhi bolu ki what is a developed country? Okay, see, different global bodies and agencies, okay, classifies countries very differently. Okay, we can see that if I say about the world economic situation and the prospects of the United Nations today, it classifies countries into three broad categories. एक होता है developed countries, एक होता है economies in transition, and लास्टली होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज, जहां पे इंडिया. एंड द आइडिया इज टू रिफ्लेक्ट बेसिक इकोनॉमिक कंट्री कंडीशंस, एंड द कैटेगरीज आर नॉट स्ट्रिक्टली अलाइन्ड विद देयर रीजनल क्लासिफिकेशंस. सो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यूरोपियन कंट्रीज आर टू डेवलप्ड एंड एशियन वंस आर डेवलपिंग, बट उनके बेसिस पे, आज यूएन के बेसिस पे, वी कैन सी दैट यूरोपियन कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक द एशियन कंट्रीज, बी इट चाइना, बी इट इंडिया. Okay, so in these very categories today, even in some point of time, we आज China, why China is directly considered amongst the developing nation? China के पास अभी पैसा है, it is directly the world's largest market. Okay, export बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्री क्यों? बिकॉज वहां पे जो बेसिक इनकम लेवल है, the human developmental index, the basic income level, the annual income level of China is equivalent with countries like India. तो इसी के बेसिस पे एक बार तो ट्रम्प का गुस्सा आ गया था कि हाउ दिस चाइना कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ डेवलपिंग कंट्री व्हिच अलाउड इट टू एंजॉय द सेम बेनिफिट्स जस्ट लाइक अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सो उस टाइम तो बोल दिया था ट्रम्प ने कि इफ चाइना इज अ डेवलपिंग कंट्री देन यूएस आल्सो शुड बी मेड वन. यूएस शुड नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस करते हैं, पैसा डालते हैं. ठीक है, सो इन दिस वेरी कैटेगरीज टुडे वी कैन सी दैट इंडिया इज डायरेक्टली trying to achieve the norms of a developed country. ठीक है, लेकिन today we can see that India is currently far behind both the so-called developed countries as well as even some of the developing countries. Often the discourse is on the absolute level of the GDP. We all know that is the gross domestic product. But if you see about India, India is one of the biggest economies of the world, even though US and China remains far ahead. But still, we can see that the classification of a developed country, that is directly on the basis of the average income of a country's people matters, and the per capita income is also a very essential ingredient of a country being categorized as developed one. Okay, but आज अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम देखें तो लोग कभी कभी बोल रहे थे कि बांग्लादेश हम लोग से ज्यादा आगे चला गया पर कैपिटा इनकम में. बट आई कैन नॉट डायरेक्टली, ये जो हम लोग का तालमेल है, जस्ट वी आर कंपेयरिंग इंडिया विद बांग्लादेश, तो ये तालमेल आई कैन नॉट
I can say that this is not a correct justification, because Bangladesh is a more lesser economy. बांग्लादेश बहुत छोटा सा इकोनॉमी है, बांग्लादेश बहुत छोटा सा देश है, हमारा यूपी का पॉपुलेशन बांग्लादेश से ज्यादा है. सो वी कैन सी दैट वी आर अ फार मोर ग्रेटर इकोनॉमी. तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं है. लेकिन फिर भी मैं आज देखूं, देन इंडिया इज बिहाइंड बांग्लादेश. टुडे द चाइना's per capita income is 5.5 that of India, and the UK is almost 33 times. Okay, चाइना हम लोग से इतना ज्यादा नहीं कमा रहे, लेकिन इफ आई कंपेयर विद आवर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप, 33 टाइम्स पर कैपिटा इनकम हम लोग से ज्यादा है. Okay, and this disparities in per capita income shows the overall quality of life in different countries. आज यूके का लाइफ देख लो और हमारा लाइफ देख लो, एक्सक्यूज मी. So we can see that a way to map this is to directly score India and other countries on the basis of Human Developmental Index. And this Human Development Index is what? It is a composite index where the final value is reached by looking at 3 factors. क्या क्या factors है? Health and longevity, quality of education, and the standard of life. तो हम लोग HDI में क्या क्या देखते हैं? 3 चीज देखते हैं HDI में. The first is the health and longevity, HNL. सेकंड में क्या देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं एजुकेशन की. और थर्ड में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखते हैं. सो उनके बेसिस पे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? The HDI is determined, and if the HDI is good, obviously the country's annual income, per capita income, will also be higher. But today we can see that in the recent times, India has directly made a drastically improved in the HDI metrics. For instance, मैं अगर एक example लो, the life expectancy at birth, that is one of the sub-metrics of the HDI. India has got from around 40 years in 1947 to around 70 years now. 69 point कुछ है, मान लो 70. तो आज इंडिया का एवरेज एज क्या है? लॉन्जिविटी बढ़ गया है, बिकॉज द हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव, द लिविंग कंडीशंस इंप्रूव्ड. 1947 में लोग 40 साल जीते थे, इसलिए तो भगत सिंह जी ने बड़ा बड़ा काम करके गया था 22-23 साल में. 22-23 साल का नौजवान बड़े बड़े काम करके शहीद हो गए थे फॉर दिस कंट्री, क्योंकि उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था? 40 साल था. लेकिन टुडे द लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायरेक्टली वेंट फॉर 40 to 70. Okay, and we have also taken a greater giant in strides like enrollment in the primary, secondary, as well as tertiary levels. But today, still India has got a huge distance to cover, because when compared to some of the countries, even with the neighboring country like China, India had also a fair distance to cover with China. Okay, be it in PPP terms, that is the purchasing power parity, okay, or be it in nominal terms. Okay, so therefore we can see that the one way to make this assessment of India achieving developed economy by 2047, we can see that we should much more focus on narrowing the gap between the poor and the rich. Okay, because India does have got a huge population which is directly rich, or sorry, which is directly poor, and a very lesser population which is directly rich. So in this period of time, if today India's current HDI is around 0.64, which is much lower than what any developed countries had. Okay, so therefore you can see that by 2047, that is the centenary of India's independence. Okay, that is around like the 100 years centenary. At least half of its citizens could join the ranks of the global middle class. ये इंडिया का एक particular aim है. And by most definitions, this will mean that households have access to better education, health care, clean water, improved sanitation, reliable electricity, safe environment, affordable housing, and various number of enough discretionary income to spend on some of the leisure pursuits. तो उसी के बेसिस पे we can see India directly going in from a developing country economy to the developed country economy. तो ये एक न्यूज है, सिंस अभी हम लोग का मोदी जी ने बोल दिया था, तो अभी ये हम लोग का कंसेप्ट्स यू कैन फाइंड अ रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर श्योर. आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज इन न्यूज. तो ये सब क्लासिफिकेशन जितना है, एचडीआई जितना है, कौन सा टर्म्स है, एवरीथिंग शुड बी रिकॉल्ड एंड रिमेमोराइज्ड बाय यू. Okay, so this is the analysis of the developed countries. Okay, coming to the next one, death due to PM 2.5, particulate matter 2.5. Okay, ये आता है about air quality index. Okay, see the particulate matter which is the 2.5 microns or less
in width is called PM 2.5. ये हम लोग को पता है. Given their size, they get easily absorbed deep into the bloodstream upon inhalation, and in result, it adversely affect the health of an individual. And according to the IQ air report, you can see that PM 2.5 is most harmful air pollutant, even very worse than PM 10. आज अगर मैं PM 2.5 के बारे में बोलूं, इफ आई कंपेयर दिस PM 2.5, सपोजिटली जो हम लोग का ह्यूमन हेयर है, ओके, ह्यूमन हेयर, तो दिस इज अराउंड 50 to 70 माइक्रॉन्स इन डायमीटर. अगर मैं सैंड के बारे में बोलूं, दैट इज द बीच सैंड, जो हम लोग के बीच के साइड में मिलता है सैंड, दैट इज अराउंड 90 माइक्रॉन्स. तो सी कंसिडर अबाउट PM 2.5, लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स इन डायमीटर. कितना छोटा है. जब हम लोग PM 10 बोलते हैं, लेस देन 10 माइक्रॉन्स इन डायमीटर. So this PM 2.5, they are very much significant and include various number of cardiovascular disease, respiratory illness, and premature mortality. But if we see about the common human-made sources that generate 2.5, is the fossil fuel powered motor vehicles, power generation, okay, that is the thermal power generation, industrial activity, agriculture, biomass burning, ये सब होता है. Okay. So you can see that around 2020, it was very much accessed by this IQ air quality index that PM 2.5 average is around 106 countries. 106 कंट्री में PM 2.5 का लेवल बहुत ज्यादा है. ओके, एंड therefore the WHO directly maintains some of the guidelines कि कितना गाइडलाइंस ये करते, कितना एक्सपोजर does not possess a health risks. ओके, तो अगर यहाँ पे बोला गया, WHO ने उस टाइम एक टर्म यूज कर दिया था कि लाइक अगर 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम PM 2.5 का इनहेलेशन हो रहा है, दैट मींस योर पर्टिकुलर हेल्थ इज नॉट एट रिस्क. लेकिन इससे ज्यादा चला गया, देन ऑब्वियसली यू विल फेस अ रिस्क टू योर हेल्थ स्टैंडर्ड्स. ओके, so today you can see that India's annual average PM 2.5 level is around 58.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. कितना होना चाहिए था? 10, लेकिन अभी हम लोग का कितना है? 58.1. सो मरेंगे लोग क्यों नहीं? 106 आउट ऑफ 1 लाख PM 2.5 डेथ्स इन द सिटीज. लोग क्यों नहीं मरेंगे? बढ़ रहा है. ओके, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है. एंड टुडे इंडिया इज होम टू अराउंड 11 ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द सेंट्रल एंड द साउथ एशिया, जो अभी वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में आया था. 11 सिटीज को, out of the 15 most polluted cities, 11 cities India से ही है. So therefore we can see that today we have seen that in the northern side, the air quality in North Indian cities is 2 to 3 times worse than the south. Bengaluru, though have got a huge population, though is very much urban in nature, Bengaluru has the cleanest air among the cities that are studied. अगर मैं पकड़ लूं, दिल्ली पकड़ लूं, देन चेन्नई पकड़ लूं, मुंबई पकड़ लूं, बेंगलुरु पकड़ लूं, ठीक है, सूरत पकड़ लूं, जबलपुर पकड़ लूं, कोई भी स्टेट सिटीज पकड़ लूं. सो बेंगलुरु बीइंग सो मच ऑफ पॉपुलस सिटी, ये सिटी इज कंसिडर्ड अमंग द क्लीनेस्ट अमंग्स द सिटीज दैट इज स्टडीड. ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिटीज ले लिया गया था. पंचकुला लिया गया था, रोहतक लिया गया था, दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, जोधपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, वाराणसी, गया, हल्दिया, चंद्रपुर, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब सिटीज लिया गया था. Among these respective cities, Bengaluru's air quality is superior. सबसे अच्छा बेंगलुरु का है, और सबसे खराब, एकदम घटिया किसका है? 409 अराउंड, ये था मुजफ्फरपुर, वाराणसी और जो बनारस बोलते हैं हम लोग, उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर था. इसीलिए वी कैन सी टुडे, बिकॉज ऑफ सच नंबर ऑफ थिंग्स, टुडे ऑल द डेथ्स आर डायरेक्टली हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस PM 2.5. Because we know once it is directly going inside the human health, then obviously it will have a deteriorating effect on the health of the individuals. Okay, so therefore we need to have a respective area so as to combat such number of menace. Today यहाँ पे recommendations देते हैं कि one can use some of the artificial or natural purifiers at home. Okay, जो हम लोग का होता है, एलोवेरा होता है, बैम्बू प्लाम, गोल्डन पोटहोल्स. ओके, तो ये सब होता है.
ओके एंड लोग सजेस्ट करते हैं कि योगा करा कीजिए, तो योगा करने से क्या होता है, इफ यू गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इट विल स्ट्रेंथन द लंग्स एंड विल हेल्प देम टू कम्बैट द पोल्यूटेंट्स. Okay, it is also proved that the food rich in vitamin E, vitamin C, okay, are very much great to reduce the effects of air pollution. जो inhale करते हो, अगर तुम विटामिन E और विटामिन C अच्छे से ले रहे हो, then it will be very much useful to it. The fluids that is helping in detoxification of the body is also very an essential phenomenon. तो इसीलिए पानी खाने के, पानी जो हम लोग we consume the water, okay, तो this water consumption is also a very essential phenomena. And therefore बोलते हैं कि पानी रोज पिया करो. We drink plenty of fluids because it's directly a recommendation to combat the respective mens. Okay, so today if we directly go with the environment, we have to choose some of the cleaner, greener modes of transport such as walking, biking, riding public transportation, lower personal energy consumption, reduce waste by recycling. ये सब करना पड़ेगा. Okay, and also we have to, as a country, we have to adhere to WHO's, World Health Organization's 4-pillar strategy. और ये 4-pillar strategy क्या है? Expanding the knowledge base, monitoring and reporting, global leadership and cooperation, and institutional capacity strengthening. So in all such numbers, today India is also directly doing its best. आज India क्या कर रहा है? Various number of initiatives ले रहे. Even you have heard about the scheme which is known as SAFAR, SAFAR. That is System of Air Quality and Weather Forecasting and Research. And through this, we are directly going for various number of air quality index. Okay, हम लोग आज 8 pollutants को बहुत ज़्यादा we are directly taking into prominence. That is the PM 2.5, PM 10, ammonia, lead, nitrogen oxides, sulfur dioxide, ozone, and carbon monoxide. इन 8 pollutants को हम लोग बहुत regulate करते हैं आजकल. And because of the regulation of such, today we are directly focused directly from BS4 से हम लोग जो आजकल vehicles है हम लोग का combustion vehicles. Okay, these vehicles are directly shifted. Their particular pollution norms are shifted from BS4 to BS6. 5 तो skip ही कर दिया क्योंकि हम लोग का environment में pollutant ज्यादा बढ़ गया था. The push of the BS6 vehicles, push to the electric vehicles or the modified vehicles or the hybrid vehicles. Even some of the policies taken by the government, supposedly Delhi government ने शुरू किया था odd even policy, ये सब हम लोग ने किया है. So through this particular things, through this particular attributes, ऐसा नहीं कि government नहीं करते, लेकिन we as the citizens also needs to contribute much and much more for the development of our environment so that we could get a clean and free environment. Because providing a clean environment is also a basic right, a fundamental rights amongst the article proven in the respective constitution of India. तो ये भी एक फैक्टर है एसोसिएटेड विद दिस डेथ ड्यू टू PM 2.5. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. क्रेडिट गारंटी प्लान. ओके, दिस क्रेडिट गारंटी प्लान एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि लाइक आज ये क्रेडिट गारंटी प्लान हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी शिफ्ट हो गया है. ठीक है, द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड दिस इमरजेंसी प्लान इन लाइंस ऑफ दिस गारंटी स्कीम ओनली. बिकॉज क्या है ये स्कीम, क्या बोलते हैं कि लाइक स्कीम वाज वेरी मच लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान. ओके, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ था? मई 2020 में, आफ्टर द वेरी पेंडेमिक, आफ्टर द वेरी कोविड दैट डायरेक्टली वैंक्विश्ड वेरियस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरियस नंबर ऑफ MSMEs. और ये क्या करते हैं गारंटी? इट्स डायरेक्टली प्रोवाइड्स 100% गारंटी कवरेज. ओके, एंड द क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन. ओके, एंड देयर विल बी नो चार्ज फॉर एनी फॉर्म ऑफ गारंटीज. और इसका जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बहुत कम है. That is capped around 9.25% for the banks and financial institutions, that is the non-banking financial corporations में we are directly going with some of the 14%. Okay, तो ये schemes का benefit क्या है? The scheme is expected to provide credit to the sector at a very lower cost, thereby enabling such number of industries, be it hospitality industry, be it the MSMEs, to meet their operational liabilities and restart their businesses after the respective pandemic. And by supporting and government by supporting with such number of credit amount, it is directly making or making the respective MSMEs or this number of hospitality industries to tackle some number of unprecedented situation in the coming times. So this scheme is directly proven to have a positive impact on the economy and support
for the revival of every sector that has directly vanquished because of the pandemic. ओके तो इसीलिए यहां पे एक पर्टिकुलर न्यूज है अबाउट दैट टू एड द हॉस्पिटल इंडस्ट्री कौन सा बोलते हैं जस्ट लाइक द पीपल जब कभी होटल में जाते हो तो वहां पे जो वेटर होते हैं ठीक है जब कभी एक लॉन्च में जाते हो जब वहां पे तुम्हें कोई एक दरवाजा खोल के देता है कोई एक बैग उठा के लेके चले जाते हैं जो रिसेप्शन में लेडीज रहती है तो ऑल दिस पीपल who are directly working for your benefits for your particular relaxations okay तुम्हें Ada say you are directly getting some of the good treatment. So you are getting a good treatment in if you are going to a respective 4-star hotel, 5-star hotel. तो ये सब कौन है? These are all people belonging to the hospitality industry. आज एक air hostess, they are also a part of the hospitality industry because they are providing you the requirements that you need on board. So everyone who is directly committed to this hospitality industry, तो जो लोग failure है, जिसका jobs गया है, जिस industry में कोई like no help has been rendered by anyone such as the MSMEs like the micro small and medium enterprises just like these industries like hospitality just like the industries of the tourism okay so all these industries who have directly impacted through the COVID pandemic they are being supported through this carried benefits or through this carried guarantee scheme तो अभी ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी आ गया है तो इवन वी आर हेल्पिंग देम टू डायरेक्टली रिनोवेट टू डायरेक्टली रिवाइव एंड देयरबाय हैविंग अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन देयर रीडेवलपमेंट्स ये एक न्यूज है अबाउट कैरेट गारंटी प्लान ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस हम लोग वैसे भी जानते हैं कि लाइक इंडिया इज डायरेक्टली अ फाइन प्रोड्यूसर ऑफ राइस लेकिन अभी तो एकदम तोड़फोड़ मचा दिया ये लोग Today, India is directly going with a more record number of rice. Rice का आज production ज्यादा है. Today, if you see about the top 10 rice producing countries in the world, okay, तो India तो 2 नंबर पे आता है, पहला produce करता है China. ठीक है? So today we can see we have got China, we have got India, we have got Bangladesh, we have got Pakistan also, Vietnam, Philippines, Myanmar, Thailand, Indonesia, and one country in South America that is Brazil. Okay. Baki, generally you can see that China, this particular region of South Asia or region of Asia only is much more focused towards rice production. क्योंकि यहाँ पे भात ज्यादा खाते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग बिना भात के रह नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है? So rice is the main staple of this respective areas, ठीक है? और ब्राजील के मान लो तो they are directly the top 10 rice producer. लेकिन आज अगर मैं इंडिया के बारे में बोलूं तो if I draw the map of India over here, इंडिया अगर ऐसे चला जाऊं ठीक है तो यू कैन सी दैट और ऊपर में थोड़ा ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दे इंडिया समथिंग लाइक दिस इज हाउस दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड डायरेक्टली कनेक्टिंग ओवर हियर तो इंडिया में डायरेक्टली यू कैन सी दैट दिस इज द रीजन वेयर राइस इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड इट कैन एक्सटेंड अप टू द रीजन ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली द गंगा वैली ओके एंड सम ऑफ द पेरी ऑन सम ऑफ द रीजन्स डायरेक्टली ऑफ द कोस्टल एरियाज क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है यहाँ पे हम लोग का एलुवियल सॉइल पाया जाता है because the rivers flowing okay so we have seen some of the major rice growing areas तो ये जो बगल एकदम साइड वाला इलाका है इसमें हम लोग का राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है आज अगर राइस प्रोडक्शन का हम लोग टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर कितना चाहिए 22 to 32 डिग्री सेल्सियस इस रीजन में हम लोग का राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है रेनफॉल कितना चाहिए 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ओके सॉइल टाइप क्या चाहिए जस्ट लाइक मैंने बोला था एलुवियल सॉइल में होता है deep clay में होता है okay then top rice producing states today who is directly the top rice producing states in India today the top is West Bengal top पे आता है फिर आते हैं पंजाब फिर आते हैं उत्तर प्रदेश फिर आंध्र फिर बिहार okay so in states like Assam West Bengal Orissa 3 crops of paddy are grown in a year okay हम लोग का यहाँ पे मतलब ज्यादा क्रॉप्स नहीं गोरा पैडी ऑफ द क्रॉप्स नहीं गोराया जाता है यहाँ पे हम लोग का जनरली वी कैन सी सम ऑफ द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी दैट इज ग्रोन ये कौन सा है ओस AUS ओस अमान एंड BORO ओके तो ये 3 पैडी क्रॉप्स हम लोग का यहाँ पे मतलब खेत किया जाता है दैट इज ओस अमान एज वेल एज बोरो okay so in this very time period we can see that abhi kya ho raha hai why the production is very much of higher today because India's today we can see that the farmers are directly producing or directly is going for the direct seeding of rice mein kya hota hai
कि like rice is first cultivated to a younger stage in some of the nurseries, और nurseries से फिर लाके directly खेत में लगाया जाता है. And therefore the output is more, and the time period that is directly required is very much of less as compared to the rice or paddy which is directly sown in the respective agricultural land. Okay, so अभी generally we can see 25-35 दिन में ये young हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का like in nurseries, okay, nurseries जल्दी हो जाता है, and in the respective agricultural land ये थोड़ा टाइम लगता है, तब जाके धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके यू कैन सी द पैडीज आर डायरेक्टली ग्रोन. तो इसीलिए जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना आउटपुट कम होगा. तो आज हम लोग का टाइम कम लग रहा है. ओके, वी हैव गॉट इवन सम ऑफ द इरिगेशनल फैसिलिटीज आल्सो. आज हम लोग का रेनफॉल ज्यादा हो रहा है यहाँ पे. ओके, टुडे द नर्सरीज आर वेल कनेक्टेड विद सम ऑफ द इरिगेशनल सिस्टम्स. So therefore we can see that paddy cultivation is directly slowly rising. Okay, because rice is both a kharif as well as rabi crop. Okay, तो ये seasonal crop नहीं. So the losses in one area or season can potentially be recouped from the other. कहीं पे कुछ लॉस भी हो रहा है ना, तो कहीं और जाके हम लोग उगा लेंगे उसको, तो that will be directly been recouped. तो इसीलिए today we can see that center projects a record production of rice. Okay, और धीरे धीरे हम लोग क्या सोच रहे हैं, even the agriculture ministry is directly coming in the picture that maize, gram, pulses, rapeseed, sugarcane could also witness high yield, says agriculture ministry. Because आज हम लोग नए तरीके, the high yielding variety seeds, the direct seeding of rice, ये सब techniques, bioengineering rice, all such हम लोग कर रहे हैं to directly make the output of rice as well as other products in a wholesome manner, and that is very much focused towards the commercial purpose. Okay, तो ये एक particular news था about the production of rice. Coming to the editorial part, that is the last topic of today. The Maritime Partnership is still in progress. तो ये किसके बाद बोल रहे हैं? Obviously, India, US. Okay, this is directly coming in the context of the India's access to the Pentagon, recently accepted by the US government. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि like we know that in this region of the Indian Ocean, तो आज यूएस इज डायरेक्टली प्लानिंग टू डायरेक्टली कनेक्ट द इंडो यूएस रीजन. इंडो यूएस रीजन कौन से बोलते हैं? द इंडो एज वेल एज पैसिफिक. सो इंडो पहले क्या था? एशिया पैसिफिक, लेकिन आज क्या है? इंडो पैसिफिक. ओके, सो टुडे द इंडियन नेवी हैज बीन प्लेइंग अ वेरी मैरिटाइम लीडरशिप रोल इन द इंडियन ओशन रीजन. वी ऑल नो दैट. The ensuring various number of maritime security and freedom of navigation in the Indian Ocean region is a very duty of the Indian Navy. Okay, although US sees India as an important bulwark in a bid to contain China, the US needs to come to terms with India's strategic compulsions also. For realizing a free and open Indo-Pacific, हम लोग जो देखते हैं आज, the US ought to accord even some of the primacy to India in the Indian Ocean region. And in exchange for India's supporting role in the Southeast Asia and beyond, India on its part would have to walk the extra mile to directly shoulder its increased responsibilities in the Indian Ocean region with the ambit of its Indo-Pacific strategy. Today, in the Indian Ocean region, we can see various number of littoral states. Okay, so इसीलिए हम लोग ने बनाया था IORA, Indian Ocean Region Association. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हम लोग का लिटोरल स्टेट्स है, सपोजली इंडियन ओशन में हम लोग मिलते हैं, श्रीलंका को मिलते हैं, मालदीव्स को मिलते हैं, ठीक है, सेशल्स मिलते हैं यहाँ पे, मॉरिशियस मिलते हैं यहाँ पे. सो इन ऑल दिस रीजन, इवन ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली कम्स अंडर सच एरियाज एम्बिट. तो इन दिस ऑल रीजन ऑफ इंडियन ओशन व्हिच इज अराउंड 68.56 million square kilometers is very much central to India's maritime interest and concern. Okay, because India's size, its trade links, and its exclusive economic zone is very much related to its security environment directly with the extended neighborhood. क्योंकि आज मालदीव्स हो गया, सेशल्स हो गया, ये सब कहाँ पे आता है? इंडिया's extended neighborhood में आता है. Okay, and Indian Navy has been very much catalyst in playing a peace, tranquility, and stability in the Indian Ocean region. And अगर यहाँ पे peace रखना है, to counter even China, India and US needs to cooperate well so as to make, क्योंकि उन लोग का भी एक डिफेंस स्ट्रेटजी है, because we know that US has directly got an area just beneath India. यहाँ पे ऐसे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, just over here we have got an area which is known as Diogo Garcia. तो वहां पे US का बेस है. It's an overseas territory. Okay, आज इंडिया directly is doing good number of exercises, supposedly the Malabar exercises with India, US combined, as well as the members of even the Quad, that is Australia as well as Japan.
So today, the Indo-Asia or this region of Indo-Pacific is a very important region. For this, for all such number of corporations, we can see that India has also signed 4 agreements of military cooperation with the US. That is the GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में साइन किया गया था। फिर हम लोग ने लेमोआ साइन किया, LEMOA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम 2016 में। फिर हम लोग ने कॉमकासा किया था, कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये किया था हम लोग ने 2018 में। फिर हम लोग ने बेका साइन किया था, BECA दैट इज द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये हम लोग ने साइन किया था 2020 में। तो ये सब क्या क्या इशारा कर रहे हैं? इट डायरेक्टली पेव्स द वे फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, greater interoperability and enhanced cooperation between the armed forces of these 2 nations. So abhi bhi, still today we have to enhance more and more on this respective area so that our respective partnership be strong and very much needed to counter China in the coming times. क्योंकि आज चाइना ने अपना स्पाइसशिप भेज के डायरेक्टली दे आर चैलेंजिंग द इंडियन ओशन रीजन। श्रीलंका में भेजा हुआ है, श्रीलंका में डॉक किया हुआ है। So they are challenging what? The Indian Ocean region, controlled by India, US, Australia, as well as Japan. और लेकिन we know that in the Indian Ocean region, यहाँ पे बाप कौन बैठा हुआ है, किंग कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे इंडिया बैठा हुआ है। So therefore, we need to regulate such ideas as soon as possible, even terming them with various number of agencies. So this is the overall analysis of the editorial board of the Maritime Partnership that is work in progress. Okay, so that is all for today. We have got some fine number of questions. You can attempt these questions in the comment section, and obviously you can find the answers in the Telegram channel of us, the Jude Royal Telegram channel. Okay, one mains question is also suggested. So we'll meet tomorrow with the same type of analysis and content. Okay, so thank you all and Jai Hind.